बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। DTVNN के साथ मैं हुरानी अंदलीब। नज़र डालते हैं अब तक की खुसूसी रिपोर्ट पर। क्या अमरीकी जमहूरियत ज़वाल का शिकार है? अमरीकन कम्युनिटी मीडिया ने जुमा 9 मई को एक अहम कौमी मीडिया ब्रीफिंग का इनेकाद किया, जिसमें एक ऐसे सवाल पर तबादला ख्याल किया गया जो पूरे मुल्क में तशवीश का बाइस बना हुआ है। क्या अमरीकी जमहूरियत ज़वाल पजीर है? ये तकरीब डोनाल्ड ट्रंप के सदारती ओहदे पर वापसी के सिर्फ 100 दिन बाद मुनक्किद हुई। ऐसा दौर जिसमें अवामी सराब में तेज़ी से इजाफा हुआ है। एक गैर जानिबदार PRRI के मुताबिक 52% अमरीकियों का ख्याल है कि ट्रंप एक ख़तरनाक अमर हैं, जबकि IPSOS न्यूज़, वाशिंगटन पोस्ट और ABC के मुताबिक एक अलग सर्वे में ये बात सामने आई है कि करीब निफ्स आबादी को खदशा है कि सदारती इख्तियारात को गैर महदूद करने, कानूनी असूलों को नज़रअंदाज करने और जमहूरी तहफ़्फ़ुज़ात को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। माहिरीन और पैनलिस्ट ने खबरदार किया कि जो कुछ हम देख रहे हैं वो अलग थलग वाक़यात नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है। अदलिया पर मुसलसल हमले, माहिरीन की जगह वफ़ादारों को तरजीह देना, आज़ाद मीडिया को निशाना बनाना, हुकूमती ताकत का इस्तेमाल करते हुए इख्तिलाफ़ राय को दबाना, सियासी इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाना। उनका कहना है कि ये तमाम अलामतें जमहूरियत के ज़वाल की क्लासिकी मिसालें हैं। इस अहम मसले की गहराई को समझने और अमरीका की जमहूरी इदारों के मुस्तकबिल का जायज़ा लेने के लिए एक मोअज़्ज़ज़ पैनल ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। प्रोफेसर लूकन अहमद वे बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा माहिर जो जमहूरियत पसंदी और आहमरियत पर तहकीक करते हैं, ने बहस का आगाज़ किया। सोवियत यूनियन के बाद के ममालिक में अपनी तहकीक की रोशनी में प्रोफेसर वे ने कहा, जमहूरियतें आम तौर पर एक रात में ख़त्म नहीं होती बल्कि बतदरीज कमज़ोर होती हैं। अमरीका में जो कुछ हो रहा है वो एक खामोश आमरियत है जहाँ ताकत को मरकूज़ किया जा रहा है, इख्तिलाफ़ राय को हरासा किया जा रहा है और जमहूरी उसूलों को कमज़ोर किया जा रहा है। ये तमाम इंतबाई अलामती किताबी मिसालें हैं। उन्होंने कहा, अमरीका का मौजूदा रुझान उन ममालिक जैसा है जो आमरियत की तरफ माइल हो चुके हैं। प्रोफेसर अजीज ज़ हक शिकागो यूनिवर्सिटी के आइनी और सकाफती कानून के माहिर कानूनी तज्ज़िया पेश किया। उन्होंने आइनी तहफ़्फ़ुज़ात की कमज़ोरी और इंतज़ामिया के बढ़ते हुए इख्तियारात पर बात करते हुए कहा, जमहूरियत का ज़वाल अक्सर उस वक्त आता है जब कानूनी निज़ाम को अंदर से खोखला कर दिया जाए। हमें ये सोचना होगा, क्या हमारी अदालतें, मुकन्ना और सिविल सोसाइटी किसी अमराना ज़हनियत रखने वाले सदर के मुसलसल दबाव का मुकाबला करने के काबिल हैं? प्रोफेसर हक ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि जब इदारों को मुनज़्ज़म तरीके से कमज़ोर किया जाए तो कानूनी चाराकार की हद होती है। प्रोफेसर ग्लोरिया जे ब्राउन मार्शल, आइनी कानून की प्रोफेसर और शहरी हकूक़ की तज़कियाकार वकील, ने अमेरिका में जमहूरियत के ज़वाल की तारीख़ी और नस्ली पहलुओं पर बात की। उन्होंने याद दिलाया कि पसमानदा तबकात के लिए जमहूरियत हमेशा एक ख्वाहिश रही है, न कि ज़मानत। उन्होंने कहा, यह पहला मौका नहीं जब अमेरिका में जमहूरियत को आजमाया जा रहा है, लेकिन इस बार फ़र्क यह है कि ज़वाल की रफ्तार और शिद्दत बहुत ज़्यादा है। हमें याद रखना चाहिए कि जमहूरियत सिर्फ इदारों का मजमुआ नहीं बल्कि एक अमली तजर्बा है। अगर ताकतवर लोग कानून को काले, भूरे और तारकीन वतन की आवाज़ों को दबाने के लिए इस्तेमाल करें तो हम पहले ही जमहूरियत के ज़वाल का शिकार हैं। प्रोफेसर ब्राउन मार्शल ने जोर देकर कहा, शहरी हकूक़ की तहरीकों और अवामी मुज़ाहमत का किरदार जमहूरियत बचाने के लिए इंतहाई अहम है। ये तकरीब आवाम के लिए खुली थी, जिसमें स्पानिश, कोरियन और मैंडेरियन ज़ुबानों में तर्जुमे की सहूलत दस्तयाब थी। शुरा को रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी तरजीह ज़ुबान मुंतखब करनी थी। जैसे जैसे तशवीश बढ़ती जा रही है और सवालात बढ़ते जा रहे हैं, ये फोरम एक अहम कौमी मसले पर माहिरीन की राय पेश करता है। क्या अमेरिका अब भी एक फ़ाल जमहूरियत है या अमरियत की तरफ बढ़ता जा रहा है? Weekly national briefing. I'm Pilar Marrero, your moderator for today. Is American democracy in decline? India, any of those places, actually, so this is that's the really big difference. And also the sort of open disregard for the courts and court rulings and legality. I think that's something that was, quite surprising to us. I can't hear you. Sorry. I'm so sorry. I was muted. I apologize. Did you finish? Yes. Okay, good. So I will move on to a question for Professor Huq.
Professor Huq, there's been many lawsuits filed against Trump executive actions and decisions. Many judges from all political persuasions have decided against his decisions. The administration seems to be complying with some orders and not with others. What happens when a president defies judges and calls them a disgrace or rejects their decisions? Thanks, Pilar, for that question. Building upon what Professor Way, I think, correctly described, in the first few months of the Trump administration, we've observed a pattern of both partial non-compliance with court orders and a broad-ranging, both rhetorical and legal attack on the court system to the extent it acts as a check on the executive branch. Citizens. And so now we see that the practice of constitutional crisis that was applied there is now spreading, being expanded to other groups. And as it's expanded, we begin to watch it in real time. And I think that has frightened many people who were used, or as I said, numb to the fact that constitutional rights, protections of free speech, equal protection, and other rights under the Constitution, voting rights, were being ignored for the most part, or just outright voter suppression was being allowed and ignored by the majority community. Institutions, the media, and the like. So I think that is really kind of a major, shift in American history going on, right now. Well, I'm going to go to the chat because we have a number of questions and they are great. Peter, you want to ask your question? Peter Sherman from American Community Media. Hi, thank you. Sorry, I was trying to unmute. I posted in the chat this question and I just want to add another piece to it. DTVNN की खुसूसी रिपोर्ट से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए जुड़े रहिए DTVNN के साथ या विजिट कीजिए हमारे सिस्टर चैनल वैसे टीवी USA, देसी उर्दू टीवी और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज़्यादा चैनल्स को एक साथ देखा जा सकता है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.